films which were, my Telugu films which were dubbed in Hindi, especially last 2-3 years during the COVID times, you know, has reached an amazing mark. I've got 2.2 billion views on YouTube. इतना प्यार मेरे को मिला कि, and I wanted, you know, to thank the audience in the right way. And when I, you know, when Gada sir, you know, wanted me to get launched in Hindi, I didn't know which film. We didn't know which film. Then we thought about Chhatrapati. Then I thought, that's it. You know, Chhatrapati was, title is only hero. 80% of hero for this film is the title. So then I was like, immediately, let's do this film. And, you know, and the film, however it turned out right now, right, you will be amazed. जब ये फिल्म आप जाके देख लेना, आप 100 या 1000 लोग को बोलते कि ये फिल्म बहुत बढ़िया है, जाके देखना बोल के. That I'll guarantee. For me, I think this feeling of doing a pan-India film came जब मैंने बाहुबली देखी थी. मुझे ऐसा लगा था, मैं एक्चुअली साउथ फिल्म्स बहुत कम देखती थी, मुझे एक्चुअली नहीं पता साउथ में क्या बनता था. बाहुबली वाज वन ऑफ दोज फ्यू एक्सपीरियंसेस जहाँ मुझे लगा, मैंने कहा क्यों नहीं देख रहे हम ये. That film had an emotion that connected way beyond language, yeah, means the visuals, the world, the expressions, and I think that's where I actually understood that art is regardless of what language you are, it has no barrier. तब मुझे लगा यार I should do a film like this अगर मेरे पास कभी आई तो. फिर जयंती सर ने तो पूरा दौर स्टार्ट कर दिया हमारे लिए, एक के बाद एक आई और पता नहीं हिट पे हिट देते गए. So I think I really feel blessed that I've got a film like Chhatrapati at a time like this, where audiences are wanting to watch pan-India films. They are wanting to see different cultures, different, you know, ethnicities, languages. मतलब मुझे लगता नहीं कि छत्रपति की जो actual story telling है, जो सर ने, विनायक सर ने की है, वो कहीं भी और इतनी conviction के साथ हो सकती है, जितनी conviction के साथ ये लोग बनाते हैं. It's amazing the way Sai jumps from there and hits someone down. I don't know how, but they do it so convincingly. It's their conviction that makes me believe in their stories. And I couldn't have asked for a better time for this film. So I'm very, very happy. And I really hope we are able to hit it out of the park with this film. अच्छा, सबसे पहले पब्लिक को मैं ये बोल दूं कि ये छोटी सी बच्ची है, इसकी छोटी सी आवाज़ है. आप ज़रा शांत रहेंगे तो फिर ये सुन पाएंगे. Thank you so much. Thank you for your compliments. There are two films which are diagonally opposite, which are releasing on 12th May. Both are my films. I play a very different role in NRI Vibes and a very different role in Chhatrapati. And it's up to the audience to decide where and how they'd like to place me. But as an actor, I think it's given me a tremendous scope. That film by itself, this film in another level, because it's got the right kind of emotion. It's got something that all of us as individuals can connect with. ये ऐसा emotion है जो आपके घर में, मेरे घर में, इनके घर में, सबके घर में और सबके दिलों में बसता है. So I think that can be the best kind of film to reach out into the audience's hearts. But you know, when we started this film, we never thought we are making a remake film. Because it's 2005 Telugu film, and we are trying to recreate that magic for today's time, and we made the film even in much, much bigger scale. So that's about it. You know, when we started this film, because it's a Telugu film, so 99.9% of the audience have not seen it here. So when they see this film, they will have that, they have seen a good film and, you know, like a straight film. So we didn't try to make it thinking that it's a remake film. So, but end of the day, one thing I would guarantee is that when they see this film, they'll have a great experience. Sir, I think I'm really inspired by all the actors, sir, who have made it. You know, you will get to learn, you know, from every actor you learn one thing. जब आमिर खान सर का फिल्म देखते ना, उसका कहानी, you know, उसका content, the way he selects his scripts, I am very amazed. सलमान खान का फिल्म, without content you want to go and watch it. उसका कंटेंट की जरूरत ही नहीं है, उसको देखने के लिए फिल्म थिएटर को जाते. You know, Shahrukh sir is like a combination of both. You know, he's a charmer, and till now, you know, when I saw Pathan, you know, I was like amazed. How do people work so hard, Habibi? So I really get inspired by every actor out there, sir. I mean, it's a great comparison, but I don't want to compare with such a legendary actors like that. But I think this trend has always been there. What my understanding was, when I was doing my acting course in Barry John in Andheri in 2010, they have showed me a reference picture as Shiva.
So I feel Shiva was only back then only pan India. It is just that because of the social media and we have so much access. अभी पूरा इंडिया क्या अभी हमारा का access है हमारे phone पे ही. So it became more easier for us to stretch our market or stretch to every corner in India. So but I think this trend has been started from long time back. Venkatesh sir have done it. Takdir, such a big hit. Takdir Wala. So that was such a fantastic hit. Anari also. Anari. So there were so many films and so many actors have actually tried it. I felt like, why not? Let me take challenge. जब life अभी कभी भी smooth नहीं रहना. पहाड़ चढ़ना, गिरना, फिर पहाड़ चढ़ना. So I think life you should always take challenges. If I'm doing my Telugu film, it's like a regular journey. And when I got this opportunity, I didn't want to lose it. I wanted to grab it in the best way possible. ये फिल्म से मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि ये जब मेरी टीम ने राइट्स सिलेक्ट किया होगा 2005 में और बनी 2022 में, तो आप सोच लो कि मेरी टीम ने जब सिलेक्ट किया होगा तब पहले तो ये स्क्रिप्ट पे ऑलरेडी कॉन्फिडेंट थे कि कभी ना कभी हम बनाएंगे. कोइंसिडेंट है कि ये RRR और गंगूबाई के बाद आ रही है, लेकिन मैं बोलूँ ये फिल्म शुरू उसी दौरान हुई थी जब गंगूबाई भी बन रही थी, RRR भी बन रही थी और छत्रपति भी बन रही थी. ये रिलीज़ थोड़ी सी देरी से हो रही है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये फिल्म भी उतनी ही अच्छी लोगों को पसंद आएगी और लोग इस पे बॉक्स ऑफिस डिजिटल, श्रीनिवास तो डिजिटल का स्टार है जो अभी लोगों को छत्रपति से पता चलेगा कि इंडिया में इससे ज़्यादा व्यूज़ अभी तक किसी स्टार के पास नहीं है. मुझे लगता है सब लोग इसको लॉन्चिंग बोलते हैं, लेकिन इसको काम बहुत आता है. ये इसकी 9th फिल्म है, तो ऐसा है नहीं कि ये लॉन्चिंग है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है कि तेलुगु से ये हिंदी में आ रहा है. तो ये तेलुगु में 8 फिल्म में बहुत अच्छी कर चुका, जिसकी मैक्सिमम डबिंग राइट्स हम लेते हैं ऑलरेडी. इतने सालों से हमारा वो बिजनेस रहा है. तो जब मेरे टीम ने ये स्टडी करी थी कि श्रीनिवास को हिंदी फिल्म में कभी भी कर सकते हैं, ये एकदम सेफ़ है, तो हमने ये कॉल लिया था. और फिर इनके फादर सुरेश जी और जिनका ये दोस्त है वो मेरा कलीग है साजिद कुरैशी, इन दोनों ने मिलके बोला कि क्या कौन से डायरेक्टर के साथ किया जाए. तो फाइनली सिलेक्ट हुआ कि इन दोनों की जोड़ी सुपर हिट है. तेलुगु में भी वीवी विनायक जी ने इसको लॉन्च किया था, तो हिंदी में भी वही लॉन्च करे. ऐसे ये फिल्म बन गई. See, I think it's showing like it's about artists, like एक actor के लिए. Absolutely, I think for an artist, what can be better कि मैं ये भी कर सकती हूँ और ये भी कर सकती हूँ. जैसे मैंने कहा कि भाई as all of us artists over here, everyone would like to perform something differently in different films. So I feel lucky that I have both these films, and it's for the audience to see, it's for everyone to see that I can do this and I can do that. Of course, आप किसी भी फिल्म से जुड़ते हो, आपका नाम आप किसी भी फिल्म को देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ ही जाती है. भले आप छोटा रोल कर रहे हो, बड़ा रोल कर रहे हो, या पार्ट ऑफ अ स्टोरी और पार्ट ऑफ अ फिल्म, लोग पैसे देंगे वो फिल्म देखने आने के लिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको एंटरटेन करो. आई एम वेरी हैप्पी दैट श्री इज़ डूइंग हिज बॉलीवुड डेब्यू बिकॉज आई थिंक इट वॉज हाई टाइम. He is at the right time and the right place with all of us, with Vinayak sir, with Jayanti sir, with him, with her, with me, with everybody. तो of course I feel like as a team हमने एक ही गोल रखा था, हमें entertain करना है, हमें masses को वो entertainment देना है. For a boy it's action, for a girl it's her songs, and I am very happy doing songs, as you know. I love it. I love being the Bareilly की बाजार में, and I love being the love interest, and I love that whole thing. मैं हमेशा कहती हूँ, मैं ना 2 एक्सट्रीम हूँ फिल्म इंडस्ट्री में. मैं छोरी भी बनती हूँ और मैं ये भी बनती हूँ, मुझे दोनों से प्यार है. So till I can and till people cast me in the next 3 films that he is doing with Jayantilal sir, please make my name there. I will keep doing this.